1 of biology. In biology, chapter number 5, the fundamental unit of life. Life. If we talk about living organisms of any kingdom, whether lower organisms or higher organisms, animal, human being, anything, they are made up of one fundamental, basic structural unit. That smallest unit is called cell. That is called cell. The word is derived from the Latin language. The word is cellule. Cellule means a small room. See, when I am saying this is derived from the word, the Latin, you must be thinking that there are many words which are derived either from Greek, Latin or Sanskrit. For example, autotrophs, hetero, auto, gastro, hepato, cyto, like these things. Because these languages are very ancient languages. Our first, the pioneer educationists have been from these particular origins only. And that's why they wrote their all material in those particular languages only. And English is very new language. We are translating these in English, so those are very new. Earlier they were in Greek, Latin, Sanskrit, on those particular languages only. So as we were saying, cell is word from the Latin word cellule. Cellule means a small room. Like if you talk about the skyscrapers, flats, वहाँ छोटे छोटे रूम्स होते हैं. या आप बात करें एक पूरी वॉल की, तो वहाँ छोटी छोटी ब्रिक्स होती हैं जिससे पूरी वॉल बनती है. सिमिलरली वो ब्रिक वॉल में वो एक रूम स्काईस्क्रैपर में वर्क करता है सेल की तरह. सेल का फिर पूरा ग्रुप आगे टिश्यू बनता है एंड देन सो ऑन. So the word is derived from this particular word. The study of cell is called cytology. Cyto word is used for basically cell. And the different aspects of cells की study is called cell biology. So cell का जो हमारे पास fundamental जितनी भी structures और जितनी टोटल स्टडी आई है, प्रॉपर्टीज आई हैं, वो 1 by 1 आई है. फॉर एग्जाम्पल सविता ने कुछ काम किया, उसने कोई थ्योरी प्रपोज की. इतने में सविता को लगा अच्छा अगर ये ऐसा हो सकता है तो इसमें ये भी तो हो सकता है. फिर उन्होंने उस थ्योरी में कुछ एडिशन या कुछ डिलीशन या कुछ डिमेरिट्स बता के एक और थ्योरी दी. फिर संजना को लगा कि अच्छा अगर सविता और सरिता कर सकते तो वही कांट आए. सो सिमिलरली देयर वर मेनी पार्टीज ऑफ साइंटिस्ट. They were working upon these things. Like if I talk about Savita and party, तो उसके लिए word use होता है Savita et al. So first of all, जो significant work हुआ वो रॉबर्ट हुक जी ने किया in 1665. Slice of CORK. उन्होंने इसमें जो कुछ भी स्टडी किया फिर बाद में उन्होंने पब्लिश किया in book माइक्रोग्राफिया. उनको इसमें कुछ सेल्स नजर आई. After 8 or 9 years and finally in 1674, ल्यूनहॉक जी आए. ल्यूनहॉक ने कहा, उन्होंने for the first time pond water से living cells को लिया और with the help of some improved microscope, he studied these things. अब माइक्रोस्कोप की बात करें तो पहले बहुत ही कोर्स माइक्रोस्कोप्स होते थे, फिर थोड़ा सा और इम्प्रूव्ड वर्जन आया, फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स आए. कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स जो आप देखते हैं जिसमें आई पीस और ऑब्जेक्ट पीस होता है, 10x, 45x, 15x ऐसी चीजें लिखी होती है. दैट इज फॉर द मैग्निफिकेशन. एंड देन इन 20th century, अप्रोक्सीमेटली इन 1940, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बहुत ही हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी से रन होता था एंड इट वाज रियली अ वेरी वंडरफुल मिरेकल इन साइंस. ल्यूनहॉक जी ने जो ये काम किया था that was with the help of some improved microscope, not compound or electron microscope. Then in 1831 रॉबर्ट हुक ने कुछ डिस्कवर किया कि सेल के अंदर एक कर्नल होता है जो सेल को कमांड करता है एंड फाइनली ही डिस्कवर्ड न्यूक्लियस. देन परकिंजे आए. परकिंजे ने 1839 पे ही कॉइन्ड द टर्म दी उन्होंने प्रोटोप्लाज्म. एक फ्लूइड सब्सटेंस होता है. जब हम सेल की बात करेंगे, सेल में न्यूक्लियस की बात करेंगे, न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड होता है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म. न्यूक्लियस के बाहर सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो लिक्विड होता है
is called cytoplasm and collectively this is called protoplasm. तो प्रोटोप्लाज्म ये वर्ड, ये टर्म किसने दी थी? परकिंजी ने 1839 में. एट द सेम टाइम जब परकिंजी काम कर रहे थे उसी टाइम पे दो लोग और काम कर रहे थे, पार्टी कर रही थी पूरी, पर उन दो लोगों के अंडर उनके एसोसिएट्स वर्क कर रहे थे, शेल्डन एंड श्वेर. और इन्होंने कहा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दे ऑल आर मेड अप ऑफ सम टाइनी सेल्स, दोज कॉल्ड सेल्स. उसके बारे में बहुत सारी प्रॉपर्टीज बताई which we call cell theory. So the cell theory was proposed by Sheldon and Schwann. You might be thinking कि मैम बायोलॉजी करा रहे हैं या हिस्ट्री करा रहे हैं? Of course this is history or biology बेटा. Actually these things are for two purposes. One is कि हमें ये पता चले कि सेल जो हम पढ़ रहे हैं या जो हमारे पास है वहाँ तक हम कैसे पहुँचे. One. Second, जो अपने एनटीएससी और नीट के एग्जाम्स होते हैं उसमें कुछ पोर्शन स्पेसिफिक होता है इन्वेंशंस और साइंटिस्ट के लिए. सो दिस विल बी हेल्पफुल फॉर दैट एज वेल, राइट. सो शेल्डन एंड श्वेन ने जो 1839 में सेल थ्योरी दी थी और परकिंजी ने भी 1839 में टर्म कॉइन की थी प्रोटोप्लाज्म. उसके कुछ सालों बाद हक्सले जी आए 1868 में. उन्होंने कहा कि ये प्रोटोप्लाज्म ही तो है जो फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ है, कि लाइफ का जो बेस है, जो सेल है, सेल का बेस क्या है? प्रोटोप्लाज्म. Then Rudolf Virchow in 1855 he said omnicellula is cellula. बोलो मेरे साथ. Omnicellula is cellula means all cells are derived from the pre-existing one. All cells are derived from the pre-existed one, right? So that was all about the history of the discovery of cell. Now we will move to the topic cell. Now if we talk about the structural organization of cell, cell का क्या organization है, कैसे बना हुआ है, क्या उसमें चीजें हैं, क्या वो work perform करता है, and so on. तो जो सेल है बेटू, राइट, उसके अंदर बहुत ही छोटे छोटे कुछ स्पेशलाइज्ड कंपोनेंट्स होते हैं जो डिफरेंट फंक्शंस करते हैं, different activities करते हैं, which are called as organelles, and these are called cell organelles. So what are the functions of these cell organelles? Making new materials, cleaning, like एक घर में कितने सारे different काम होते हैं तो उसी तरह से सेल में भी होते हैं. क्लीनिंग ऑफ द वेस्ट मटेरियल, नया मटेरियल बना है तो कोई मटेरियल ऐसे भी तो होगा ना जो पहले से वेस्ट पड़ा है कि उसको निकालना जरूरी है, उसके लिए अलग से इनके पास ऑर्गेनेल्स होते हैं. कोई जो नई प्रोटीन सिंथेसाइज करना है, प्रोटीन बनाना है, लिपिड सिंथेसिस करना है, आरएनए सिंथेसिस करना है. सो देयर आर नंबर ऑफ फंक्शंस फॉर व्हिच डिफरेंट कंपोनेंट्स आर देयर व्हिच आर कॉल्ड ऑर्गेनेल्स. एक टिपिकल सेल की अगर हम बात करें तो उसमें ये तीन हेडिंग्स के अंडर ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं. वन इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन व्हिच इज आल्सो कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन. ये जो बाहर की कवरिंग होती है जो अंदर के पार्ट को बाहर के एनवायरनमेंट से सेपरेट करती है. सो दिस इज द आउटर कवरिंग ऑफ अ सेल व्हिच सेपरेट्स द इनर कंपोनेंट्स फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. सेकंड वन इज न्यूक्लियस जो सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है. न्यूक्लियस, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियर एनवेलप. And then cytoplasm, we were talking about cytoplasm, the semi-liquid which is present in the cell. सारी एक्टिविटीज जो परफॉर्म होती हैं वो इसकी प्रेजेंस में होती है. इन तीन के अलावा आप देखते हैं प्लांट सेल, फंजाई और मैनी बैक्टीरिया में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक और आउटर कवरिंग होती है, एडिशनल आउटर कवरिंग, which is called cell wall. So if I talk about is cell wall present in animal cell, your answer will be no. If I say is cell wall is present in plant cell, then your answer will be yes.
Because in plant, hardness is there. In animal, no hardness is there like plants. That's why this is the main difference between these two types of cells. Now we're talking about one by one their functions and their coverings. Plasma membrane. What are the functions of plasma membrane? Which we are talking about that this is the outer covering. So number one, it gives shape. जैसे घरों के डिफरेंट टाइप्स की शेप होती हैं कि ये ऊपर से ऐसा है कैसा है, तो वो बाहर की कवरिंग ही तो है, आउटर लेयर ही तो है जो उस घर की शेप को स्पेसिफाई करती है. सो सिमिलरली इट गिव्स शेप टू द सेल. मैकेनिकल बैरियर एक बार का काम करती है बाहर के एनवायरनमेंट से अंदर वाले को बचाए रखने के लिए. एंड दिस इज परमिएबल. परमिएबल मीन्स अपने थ्रू चीजों को पास होने देती है और कुछ सिलेक्टिव चीजों को ही पास होने देती है. दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन. सिलेक्टिव परमिएबल. स्पेशलाइजेशन. कोई पर्टिकुलर फंक्शन करने के लिए आप देखते हैं कभी कभी ये मॉडिफाई हो जाते हैं कि कोई और वर्क कर पाए, कोई और स्पेशल टास्क कर पाए. फॉर एग्जाम्पल आप देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो माइक्रोविलाई होते हैं टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, राइट. सो दैट इज स्पेशलाइजेशन. सेल कंटिन्यूटी. अगर एक सेल यहाँ है उसकी साइड में दूसरी सेल है तो एक के साथ एक कंटिन्यूटी बनी रहती है. मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंसेस. अब कोई चीज अपने घर में आ रही है, गेट खोलना है नहीं खोलना है, तो वो मूवमेंट. अब ये जो मूवमेंट होती है सेल में सब्सटेंसेस की, दिस इज ऑफ टू टाइप्स. सो व्हिच कम अंडर द हेडिंग ट्रांसपोर्ट थ्रू सेल मेम्ब्रेन. ट्रांसपोर्ट इज आना जाना कि कौन सी चीज आ रही है कौन जा रही है. सो दिस ट्रांसपोर्ट और यू कैन से मूवमेंट इज ऑफ टू टाइप्स. एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट. एज नेम इंडिकेट्स, एक्टिव मीन्स जिसमें एनर्जी रिक्वायर्ड हो, पैसिव मीन्स जिसमें कोई एनर्जी रिक्वायर्ड ना हो, आराम से सुस्ती से काम हो. पैसिव में आते हैं हमारे पास डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस. डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस की जब आप डेफिनेशन करेंगे तो आप देखेंगे कि देयर इज द ओनली डिफरेंस. ऑस्मोसिस में बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन चाहिए होती है, जबकि डिफ्यूजन में नो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड. एक्टिव ट्रांसपोर्ट में बल्क ट्रांसपोर्ट होता है और एक फैसिलिटेटेड, जिसको हम फैसिलिटेट करते हैं, जो एक्टिव आयन पंप्स, पोटेशियम सोडियम पंप्स. बल्क ट्रांसपोर्ट इज अगेन ऑफ टू टाइप्स, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस. एंडो मीन्स इनसाइड, एक्सो मीन्स आउटसाइड. सेल के अंदर कुछ चीज आए एंडोसाइटोसिस, सेल के बाहर कोई चीज जाए एक्सोसाइटोसिस, राइट. So that was all about the transport through the cell membrane and the functions of plasma membrane. See, animal cell organelles, this is the chart. If you have a look, this is nucleus, inner part is nucleoplasm, nuclear pores, nucleolus, centromere, and the outer covering is nuclear envelope is present. In its genetic material is present, which is called chromatin. And then chromatin contains chromatin filament, which contains again nucleosomes and histones, and DNA as well, deoxyribonucleic acids. In DNA, different types of nucleotides and nucleosides are there. In nucleotides, you will see ribose sugar, pentose ribose sugar, plus phosphate group, plus nitrogenous bases, that purines and pyrimidines. So they are present inside it. I'll explain these in next video. Cell membrane, Golgi bodies, centriole, ribosomes, endoplasmic reticulum, cilium or flagellum. Singular is cilium or flagellum, plural is cilia or flagella. Mitochondria, lysosomes, peroxisome. If you see, is there any plastid? No, because this is animal cell organelle chart. Plastid is present in plant cells. That chlorophyll, chloroplast you have read in photosynthesis, right? So, if we talk about these cell organelles, whether they are covered by a membrane, whether they are covered by double membrane or they are membraneless, so under these there are three, we can categorize under three categories. Double membrane, mitochondria, outer and inner layer, and plastids. These are double membranes. सिंगल मेम्ब्रेन सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन होती है जिसके बाहर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स. विदाउट मेम्ब्रेन, जिसके बाहर कोई मेम्ब्रेन ही नहीं, राइबोसोम्स
and centrosomes. In this module, we will talk about the cell organelles. In last module, we were talking about the history of cell and some organelles, but here we will study them explained. Now see, cell wall. Cell wall is present in animal or not? No. It is present in plant cells, some bacteria except mycoplasma, fungi. Do you remember these things? So cell wall, this is very rigid, supportive and protective as well. Outside the plasma membrane in plant cells. So this cell wall is made up of cellulose in plant cell, while this is made up of fungi cellulose in fungi, which is called chitin. So if I ask you that plant cell wall is made up of, then your answer will be cellulose. If I ask you fungi cell wall is made up of, then your answer will be chitin. And in bacteria, this is made up of peptidoglycan, or you can say murin. So please revise these things. These are very important for NTSC and NEET exam. Then functions of cell walls. As we already discussed that rigid, supportive, protective. So functions are derived from this only, that this gives mechanical strength and support against pathogens and some mechanical injuries of cell. And these are freely permeable to water and substances in solutions, जो यहाँ से वहाँ permit करती हैं आने जाने को. Then next organelle is nucleus. Nucleus is also called brain or control room of the cell. And you know who discovered it? Robert Brown, right? इसके पोजीशन एनिमल सेल में और यंग प्लांट सेल्स में तो होती है बेटा सेंटर में. बट जैसे जैसे प्लांट सेल मैच्योर होती जाती है तो सेंटर में वैक्यूल बड़ी होती जाती है और वो न्यूक्लियस को पुश करती जाती है टुवर्ड्स द पेरिफेरी. अगर हम इसके नंबर की बात करें तो इन यूकैरियोटिक सेल्स, नाउ ओनली आई विल टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ सेल्स व्हेन यू विल गेट टू नो अबाउट यूकैरियोटिक सेल्स. सो इन यूकैरियोटिक सेल्स one nucleus is there generally. So eukaryotic cells are uninucleate. In paramecium, two nucleus are there, binucleate. While if I talk about fungi, multinucleate. Multi means many. So in fungi, many nucleus are there. Plural of nucleus is nuclei. So in nucleus, nucleoplasm is there. As we were talking about cytoplasm, protoplasm, similarly this is nucleoplasm. A transparent semi-fluid colloidal substance. Do you remember colloidal? The particle size between true solution and suspensions, right? So this is transparent semi-fluid and colloidal substance. Then it contains mainly two parts. One is nucleolus, and second is chromatin material. Nucleolus, in this nucleolus, no outer membrane is there. This is membraneless. But this is very rich in protein and RNA because this is the site of ribosome synthesis. And because this is the site of ribosome synthesis, that's why nucleolus is called ribosome factory. If question comes that the other name of nucleolus is, then your answer will be ribosome factory. Chromatin material. Chromosomes are here. Chromosomes. अगर मैं बोलूँ मेरी जेनेटिक प्रॉपर्टी मेरे पेरेंट्स से मुझ में ट्रांसफर हुई है तो दैट इज ड्यू टू क्रोमोसोम्स. क्रोमोसोम्स आर विजिबल ड्यूरिंग सेल डिवीजन ओनली. जब सेल का डिवीजन होता है जो आप पढ़ेंगे आगे माइटोसिस और मियोसिस में, तो एट दैट टाइम ओनली दिस इज विजिबल. और सेल डिवीजन के इंटरफेस पार्ट में दिस इज नॉट विजिबल. देन क्रोमोसोम्स आर ऑफ टू टाइप्स, सोमेटिक क्रोमोसोम्स एंड सेक्स क्रोमोसोम्स. Somatic chromosomes are also called autosomes. These are also called autosomes, while sex chromosomes are called allosomes. And number of chromosome fix होता है हर species का. Means it vary from species to species. कई जगह ये single भी मिल सकता है और कई जगह pair में भी. अगर हम अपनी बात करें human cells की, तो somatic chromosomes are 22 pairs. While sex chromosome is one pair. Sex chromosome जिससे ये होगा कि boy baby और girl baby. So there are 23 pairs of chromosomes in human cell. Pairs means total chromosomes are 46. Then if I talk about the types of cells, then there are two types of cells, beta. Prokaryotic and eukaryotic. Pro
उसके बाहर की कोई पर्टिकुलर मेम्ब्रेन भी नहीं होती। उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक ही जगह लोकलाइज्ड होता है, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोइड, ऑइड, एंड्रॉइड, जियोइड, फाइन, मेटलॉइड, मीन्स न्यूक्लियस जैसा, जो उसका वर्क जो होगा वो न्यूक्लियस जैसा होगा। इसका जो साइज होता है बेटे दैट इज 1 to 10 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर अभी मैंने लास्ट टू लास्ट वीडियो में आपको बताया था, माइक्रो मीन्स 10⁻⁻⁶ मीटर, राइट। तो प्रोकैरियोटिक सेल का जो साइज होता है दैट इज 1 to 10 माइक्रोमीटर। एंड हियर दिस सेल ऑर्गेनेलिस, इफ यू रिमेंबर in last module we categorized the cell organelles among 3 categories, like whether membrane is there, if membrane is there, whether single or double, right? So here in prokaryotic cells cell organelles are membraneless. तो क्या माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ प्रेजेंट होगा? No, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया तो डबल लेयर्ड है। So which organelle will be present here? Ribosomes. And ribosomes of which kind? 70 Swedbergs or 80 Swedbergs? The answer is 70 Swedbergs. Here, as we already told, that nucleus is not well defined, membrane is not there, so genetic material is localized, which is called nucleoid, android, geoid, metalloid, oid, means की तरह, like, so nucleoid जो nucleus की तरह काम करता है। If we talk about eukaryotic cell, you means true. The plant cell and animal cells come under eukaryotic cells. हम यहाँ साइज की बात कर रहे थे 1 to 10 माइक्रोमीटर, while in case of eukaryotic cell the size is 5 to 100 micrometer. Here those all organelles which we were talking about, whether double membrane, single membrane or membraneless, are present here. जो राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं वो 80 Swedbergs के होते हैं साइटोसॉल में, साइटोप्लाज्म, और 70 Swedberg का होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। और देखिए प्रोकैरियोटिक में तो माइटोकॉन्ड्रिया था ही नहीं। And you know one more thing which I was thinking bete, if we were there in live class, some of you must have asked about that gas tragedy in Visakhapatnam, and some of you would have asked, ma'am, which gas was there? Styrene. In polymers you have read polystyrene. See, thermocol और those कोल्ड ड्रिंक के जो डिस्पोजेबल ग्लासेस होते हैं वो यूज होते हैं इससे। पॉलीस्टाइरीन, स्टाइरीन का फॉर्मूला क्या होता है? बेंजीन पे इथीन, ठीक है। तो ये स्टाइरीन गैस लीक होने के कारण पॉलीमर्स, हम बात करते हैं कि प्लास्टिक्स भी हमारे हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं, तो ये गैस लीक होके भी हार्मफुल हुई, और इसके लिए काम किया फिर कि इसको रोकने के लिए नेशनल टॉक्सिकोलॉजी जो यूनिट्स होती हैं उसमें टर्शरी ब्यूटाइल कैटेकॉल, देखिए ये बेंजीन के ऊपर OH लगना इज व्हाट? फिनॉल। इसकी ऑर्थो पोजीशन पे एक और लग जाए तो बेंजीन 1,2 डाइऑल, दिस इज कॉल्ड कैटेकॉल, दिस इज कॉल्ड कैटेकॉल। और अगर इसी कैटेकॉल की पैरा पोजीशन पे, राइट, इस पे लग जाए टर्शरी ब्यूटाइल, दैट इज कॉल्ड पैरा टर्शरी ब्यूटाइल कैटेकॉल, जो इसके लिए यूज हुआ। नाउ सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेलीज, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेलीज मीन्स वो ऑर्गेनेलीज जिनके पास खुद का सर्कुलर डीएनए, डबल हेलिकल नहीं बेटा, सर्कुलर डीएनए, एंड राइबोसोम्स होते हैं 70 Swedbergs के, so that they can prepare their protein on their own. तो वो हमारे पास है माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। So if I ask name any semi-autonomous cell organelle, then you may answer either mitochondria or plastids. But for plastids, this is present in plants only. This is not present in animal-minded. So mitochondria and plastids, what is the similarity? If question comes, what is the difference and what is the similarity? So similarity is what? Both are that semi-autonomous. Both have their own this circular DNA and 70 Swedbergs ribosomes. Both of them can prepare their own proteins. And one more thing, both of them are double membrane. अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया को देखें तो ये डबल मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन में अंदर की तरफ फोल्ड्स होते हैं which are called crystal, right? And this
plastids are also of double membrane. Mitochondria was discovered by Colliker and the name was given by Benda. Right? कि हमने कोई चीज डिस्कवर तो कर दी लेकिन उसका नाम कोई और दे रहा है. So mitochondria was discovered by Colliker and the name was given by Benda, while plastids, this was discovered by E. Haeckel in 1866. E. Haeckel. In mitochondria, as we were talking about the outer membrane, inner membrane, and the space between outer and inner is called intermembrane space. See, external membrane, internal membrane. Many folds are there, which is called crystal. And the space between these two is called intermembrane space. इस पे बेटा होते हैं ऑक्सीजोम्स F1 particles. सेलुलर रेस्पिरेशन, सेल लेवल पे जो रेस्पिरेशन होता है, जो हम फूड खाते हैं उसमें ऑक्सीजन ऐड करके जो एनर्जी मिलती है, दैट अकर्स एट माइटोकॉन्ड्रिया ओनली. सो जो एनर्जी मिलती है उसके बेसिस पे हम इसको कहते हैं एनर्जी करेंसी और पावर हाउस ऑफ द सेल. पावर हाउस ऑफ द सेल इज माइटोकॉन्ड्रिया. सो हियर जो एनर्जी मिलती है दैट इज एडीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट. इफ इट इज एएमपी, adenosine monophosphate. If it is ADP, adenosine diphosphate, 2 phosphate, 1 phosphate, 3 phosphate, 3 phosphate, right? So in plastids, as we already told that this is present in plants. On the basis of color, plastids are of two types, either colorless or color. If it is colorless, then we call it leucoplast. If it is color, then it can be of two types, chromoplast and chloroplast. Chromo में आते हैं बेटे हमारे पास red, orange, yellow colors. Flowers पे भी आपने colors देखे हुए हैं. Collectively, these are called carotenoids. While in chloroplast, chlorophyll is there, which gives green color to that photosynthetic pigment, green color, that is chlorophyll. So इसमें ये outer membrane, inner membrane, अंदर जो होते हैं थाइलोकॉइड से ग्रेना बने होते हैं. क्या बने होते हैं? ग्रेना. These are, ये जो ऐसे लड्डू रख के और यूं फ्लैटन कर दें तो थाइलोकॉइड से मिलके बने ग्रेना. सिंगुलर इज कॉल्ड ग्रेनम एंड प्लूरल ग्रेना. इन ये आपस में जुड़े होते हैं बेटे, राइट? इस तरह से matrix is present, which is called stroma. Stroma में होती है डार्क रिएक्शन. इधर थाइलोकॉइड्स ग्रेना में होते हैं सोलर लाइट को ट्रैप करने वाले एंटीने. सो लाइट रिएक्शन. फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म जब आप नेक्स्ट ईयर करेंगे तो आप उसमें देखेंगे लाइट और डार्क. तो लाइट रिएक्शन यहाँ होती है ग्रेना में, थाइलोकॉइड्स में. सो दिस बेसिकली इसका काम क्या हुआ? फोटोसिंथेसिस करना. फोटोसिंथेसिस से क्या बनता है? फूड. सो दिस इज कॉल्ड फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट सेल्स और किचन ऑफ द सेल, राइट? बेटे watch this video twice, read the book and then again watch it. Then go through question answers and I am sure that you will be quite good commander of this chapter. Alright, bye bye.